Good evening, Pallavi. Thank you so much for agreeing to do this conversation with me on women in architecture. It is really a blessing, as well as I'm grateful that you have managed to find out time at such a short notice to have this conversation with me. This work is basically to get a better understanding of women in the profession of the built environment, especially the womanhood part of it. You know, what it is to be woman in the profession of architecture and allied fields, whether it is engineering, urban design, planning, landscape, and so on and so forth. It's a research, long-term research, I will say, and the method is called autoethnography, where the focus is on your life being a woman in the profession, and it's like your biography and my pen, you know. So we wish to write a manuscript, which is a coffee table book, where we have a target of 100 women, and we have crossed 1/4. So we are really hopeful and motivated. And at the same time, build this YouTube series. So there are two aspects where your information will be recorded in the text format and in the video format. So I need your permission for that. And with this, I thank you once again to join. There are very simple questions for you about your life. So welcome once again. Thank you so much, Pallavi. Thank you, Mansee. Thank you, Soumya. Okay, so maybe let me start with the questions. Very simple question. We start with, and I take you back to many years ago when you had actually decided, or you got into architecture. What is like in your house? What brought you to the architecture education? High school, Actually, graduation, what? Actually, I grew up in Kenya, that is East Africa. And when we came to Pune, that was my parents' hometown. My interest was always in medicine. I loved biodiversity and I really wanted to be a doctor, and I loved zoology, botany were my favorite subjects. In school also, my journals used to be the best. And I was very sure that I'm going to be doing architecture. But ऐसे हुआ कि जब 12th की सारी grades ये वो I just missed by marginal, and my sister was doing architecture at that time, and I had a good hand. So उस time 1988 के time या 1980 के time कैसे था कि if you have a good hand चलो architect बढ़िया बन सकते हो. So architecture join कर लिया. So it was just like a journey which I by default चली गई वहाँ पे architecture में. और वो करते करते वहाँ लैंडस्केप में बड़ा रुचि होने लगा मुझे. 3rd year 4th year I started loving the subject of landscape, which allowed me to look at the environment the way I had wanted to as a child. That was the best part about architectural education. And as you know, I got married and I came to Mumbai. I was working with my husband as an architect. कर रहे थे और छोटे-छोटे landscape projects, बंगला करो, terrace करो, ऐसे छोटे landscape projects कर रही थी. And I also was teaching at an institute in Mumbai. So while I was teaching in that institute, I got an exposure to all these subjects of water, wastewater, building services, town में पानी कहाँ से आता है, कैसे जाता है, building में fire fighting यानी क्या है. So वो सारी subjects में मैं बहुत रुचि लेती थी और पढ़ाने के लिए मैं रात बैठ के lectures लेने की कोशिश करती थी. और तब मैं कुछ जानती नहीं थी. मैं तो खाली I just knew that okay, tomorrow morning I have to go and present in front of this 40 odd batch this batch who doesn't like to understand water, wastewater, they want to only do design. ऐसे होता था. तो वो एक मुश्किल थी उस वक्त की to grab their attention for these subjects. तो मैं बहुत सारी नई चीजें उस वक्त in 2000 I was trying with them. Rain water harvesting का concept में लेके आई उनके साथ. फिर मैं pollution and the causes of pollution in wells and dug wells and lakes, ये subjects में उनके साथ लेने चली. और fortunately the college was allowing me to take my subject the way I wanted, water supply और drainage का, and landscape projects also. So पवाई लेक पे लेके जाओ बच्चों को. उस तरीके से environmental issues में exposure was what I was trying for the students. और while I was teaching, I did my masters in town planning. Town planning में करते करते मैंने, that was another milestone, was I took a topic of impact of development on the environment. So impact of development on the environment was such a new subject altogether.
and I took the Mumbai Lake region, पूरा पवाई लेक जो IIT के पास में है, हीरानंदानी के पास जो पवाई लेक है, और उसके ऊपर 3 लेक्स है दूसरे. Yes. So वो सारा पढ़ने की रुचि थी, and I took that as my topic for research. और वो वाला मेरा जो थीसिस था, रिसर्च थीसिस, I won the SIDA scholarship, Swedish International Scholarship for Sustainable Development. वो scholarship was another milestone and a turning point in my life. कि वहां पर क्या हुआ, मैंने देखा कि इकोलॉजिकल इनपुट्स ऑफ अ टाउन वर इंटीग्रेटेड इन टाउन प्लानिंग. कि जैसे नदी है, नदी के कहाँ से कैचमेंट किस तरीके का है, पेड़ पौधे कौन से हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है पेड़ पौधों की. सो देयर वर ऑल दीज न्यू टर्मिनोलॉजीज दैट आई वाज एक्सपोज्ड टू. I was completely baffled when I went over there and I saw the way the town planners and the architects were working on just the waterfront of Gothenburg in Sweden. Gothenburg एक टाउन है, वहां पर उनका डिजाइन जो होता है वो सारे रेजिडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं. So they put it forth in front of the residents and they discussed it. तो उसमें वाटर कैचमेंट सारी बातें थी कि जो मैंने अपने यहाँ देखा नहीं था कि ऐसे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और उसको इतना डिस्कस कर रहे हैं रेजिडेंट्स एसोसिएशंस के साथ. तो एक अलग सा मुझे एक्सपोजर मिल गया था. Then it was when I came back from there 2005 में, it was just क्या कहते हैं, starting with the letter go, you know. उसके बाद then पीछे देखना ही नहीं था. One municipal corporation to another municipal corporation बुलाने लगे, कहने लगे हमारे वाटर बॉडीज जो है शहर में उसका क्या हम कर सकते हैं. वैसे मुंबई सिटी, ठाणे सिटी, नागपुर सिटी और रत्नागिरी बेल्ट में सारे जो 4-5 सिटीज है, लोनावला, खंडाला, ऐसे इट वाज जस्ट लाइक आई सेड, नो लुकिंग बैक, यू नो. और आर्किटेक्ट्स की टीम जमा होती गई और हमारी जो टीम बनने लगी फिर मल्टी डिसिप्लिनरी बनने लगी, क्योंकि मैंने गॉथेनबर्ग में देखा था कि टीम में एक जियोलॉजिस्ट भी था, एक बॉटनिस्ट था, फिर वहाँ का वाटर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट था. सो ऐसे मैंने कहा आईआईटी में गई. आईआईटी में जो मेरे रेफरेंस थे प्रोफेसर्स के पास गए और मैंने उनको कहा कि सर ये सिटी का हम लोग कर रहे हैं, सो आई वांट योर हेल्प. सो वो एक तो एज अ लेडी who had this exposure in Gothenburg with a scholarship, जो इतना sincerely इसने इतना मैप किया है. Somewhere I feel as a woman I got that opportunity of they believed in me, ऐसे था. That was the added advantage that I got. सो आईआईटी के प्रोफेसर्स के साथ हम लोग हाइड्रो जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है आईआईटी में, जियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, तो उनके साथ ये काम करते करते ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, बिकॉज वाटर इटसेल्फ इज एन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट. तो इसलिए हमें निश्चित की जरूरत पड़ती है, हमें सागरिका दामले की जरूरत पड़ती है. सो वी नीड सीमा फ्रॉम भुज यूनिवर्सिटी. सो वी नीड ऑल दीज जियोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स टू अंडरस्टैंड द लेक रीजन्स, टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कौन से एनिमल्स की हैबिटेट है, वो हैबिटेट कैसे कंजर्व करनी है. सो इट्स नॉट जस्ट कंजर्विंग दैट वाटर बॉडी. सो इट ऑल स्टार्टेड getting into how one conserves the whole catchment. Within that catchment, what is happening within the catchment? अगर building or architecture built form है, अगर तो built form है, तो how are those buildings disposing the wastewater? Yes. Where is the wastewater from those buildings going? And is it touching the lake? If it is coming to the lake, then it has to be purified and then be brought in. Because lakes, they need water. That तो we need, you know, that lake को तो आजू बाजू के कैचमेंट से पानी आएगा, वो तो हम डाइवर्ट नहीं कर सकते. So during that time, somehow the municipal corporations were simply diverting the water going to the lakes. Yes. उन्हें ये लगता था कि चलो डाइवर्ट कर दो, फिर पानी अपने आप में रह जाएगा. But that is not the right. You have to allow the water to reach the lake, allow it to flush. You know, जो ऊपर नीचे होना चाहिए पूरा पानी, and then it should be flushed out. So inlet कहाँ से है, outlet कहाँ से. तो पहले जाते थे हम लेक पे तो पहले बोलते थे इनलेट आउटलेट कहाँ है, हमें दिखाओ. किसी भी जंगल में जाओ, कहाँ पर भी ढूंढ निकालो उसके इनलेट आउटलेट्स. तो they would be amazed at my team. जो हमारे आर्किटेक्ट्स जो ज्वाइन हुए थे हमारी टीम में, जो जूलॉजिस्ट ज्वाइन हुए थे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, आईआईटी के बच्चे थे. So बच्चे मीनिंग they were graduates, fresh graduates who are interested in this kind of a project. And they would walk into that wetland or fearlessly we would walk. You know, सांप वाप कुछ नहीं डरते थे, चलो जाना है और चल के देखते थे. And touchwood अभी तक तो हम सारे we started understanding the water body at the back of your hand. You know, पता होना चाहिए कि अच्छा ये water body है तो उसका catchment कैसे. You have to start feeling it. You have to understand the story that the water body is telling you. So उस तरीके से you just plunge into the finer intrinsic aspects which are interconnected of that water body.
So there is the bird life which is interconnected with the trees are interconnected with the soil is because of the geological condition, and the water is because of the hydrogeological condition. तो ये सारी टीयर जो है वो समझते 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 हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करने में बड़ा मजा आने लगा, and we were able to solve questions. So believe me Mansi, क्या होता था ये सारे, you know that water bodies are with the collectors, meaning it is public land. Yes. It is not private land. So you can imagine how difficult it is to take an appointment with the commissioner, उनको बताओ ये ऐसे है. But वहाँ पे group which is led by a lady, हमें बड़ा reception अच्छा मिलता था, and they would listen to what we were telling them. But वहाँ जाते समय हमें मालूम था कि we have to validate whatever we are seeing. We can't just say कि नहीं हमें ये पसंद नहीं है इसलिए हम इधर पौधे लगा रहे हैं. We had to really say कि no, this is the habitat of the bulbul bird, and because the bulbul bird के nest हमें वहां दिखे हैं इसलिए आप आपका पाथवे यहाँ से मोड़ लेना. उस तरीके की छोटी छोटी एस्पेक्ट्स हम लेक में ऐड करते थे कि which they were also connecting to those. येलो ओरियोल कहीं कहीं है तो येलो ओरियोल की भी स्पेसिफिक ट्रीज होते हैं, सो वो ट्रीज है तो वो उनको हम दिखाते थे कि देखो ये इसका हैबिटेट है, तो इस तरीके से वो लेक को कंजर्व करे. एट द सेम टाइम द बिग पॉइंट या तो कौन उसका मैं कहूंगी कि ये मुंबई शहर है, थाने नागपुर ये सारे शहरों में इंच इंच पकड़ते हैं, यू नो. Absolutely, land. रियल एस्टेट तो बड़ा है. सो उस वजह से मुंबई सिटी में 85-86 लेक्स है, छोटे छोटे, नॉट एज बिग एज पवाई लेक. हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स दूसरे सिटीज में जगह पे है. So that's how the story just went on and on and on. फिर हमने ब्रज कुंड के प्रोजेक्ट करे, वर्ल्ड बैंक फंडेड था वो. तो ब्रज में ऐसे 11 कुंड है, तो वो कुंड कैसे रिवाइव करने हैं, तो वी फॉलोड द सेम मेथोडोलॉजी जो हमने खोजी थी, जो हमने बड़ा रिसर्च कर करके, क्योंकि दिस इज द वे वन नीड्स टू लुक एट वाटर बॉडीज करके हमने वो करा था. वहां पर भी यूपी में भी हमारी टीम को बड़ा अच्छा, दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन अस, दैट आई मस्ट से, and I should give all the credit to my team for it. कि जो कुछ भी काम करते थे, जो भी मैप्स रेडी करते थे, वो बड़ी दिलचस्प, they were taking a lot of interest in doing their work. So जब भी हमारा presentation होता था, तो always we've seen in the presentations all the government officers used to be just listening to what we are saying because वो true stories थे. Very good, very interesting. I will bring you back to your school, college time where you were in architecture school, and I was really flowing with you the way you were passionately talking about, because there are not many women in the country where they have taken architecture as their education, and they have, gone further and redefined architecture into urban lakes, and then further to the life of the lakes, to talk about animals and all. We have a lot of common points to discuss. We have a lot of common points many things to discuss, and I almost feel that am I talking on my series on women for water, or am I talking on women in architecture? That's the best part of this conversation until now. Because the conversation is focused on being women in the sector, I wish to bring you back to your school education days and your undergraduate, postgraduate days when you were studying, and try to understand, did you ever realize that you were a girl or a woman, and that is going to make a difference in the way you pursue your career? What was it in your college days? College में yes, 45 students में we were just 13 girls in my class. Okay. Only 13 girls, और हमेशा हम वो 13-14 girls इकट्ठे रहते थे. और but Pune is a city which did not have so much of a problem when it came to gender bias. Okay. College में sorry. कॉलेज में एक्चुअली सबमिशंस और ये वो सारे इकट्ठा ही होते थे. उसमें कुछ ऐसे मैंने देखा नहीं कि गर्ल्स को अलग ट्रीट कर रहे हैं बॉयज को. बॉयज ही इनफैक्ट हालांकि कहते थे कि देखो गर्ल हो इसलिए तुम्हारा सबमिशन पास हो गया, देखो मेरा सबमिशन नहीं पास हो रहा है. तो जब गर्ल हो तो इसलिए सर के सामने assignments में girls always performed well. But the boys would use it. हाँ बस सर के सामने खाली ऐसे ऐसे कर लिया, तुम्हारा सबमिशन हो गया, ऐसे boys. That will be in today's language, it will be called sexist remark, by the way. Yeah, मगर उस वक्त तो चलता था. It was 30 years ago. That's exactly.
8 years ago trips भी बहुत हुआ करती थी. We used to go to Agra, Fatehpur Sikri, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्किटेक्ट्स हमारा एक नासा हुआ करता था, तो वहां पर भी वी सॉ लॉट ऑफ गर्ल्स. सो आई बिलीव दैट इन द 80s गर्ल्स के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी. Traveling also, the boys would take care of us and travel. We were at the similar time, by the way. I joined architecture in 90, and I think you joined at the very similar time. And I can relate with it. When you said that you were good in drawings, and that's why you felt like a natural transition to architecture. Because in this study, it is also for me to reflect upon and see what are the commonalities which a woman really face through. So when you were graduating, and we all aspire to do something. Did you ever feel that being a woman, there will be a different path for me, or there will be more hardship? Was this feeling sometime in your head, or did you really face it, or what was it when you were graduating, and how did you decide what to do next? Mentors, did you really have any things like this? I say because it was Pune city, which was there have been lots of ladies who've been revolutionary, who've done revolutionary work, and Pune mein there have been so many cases of instances of families who have allowed their ladies to go ahead and take charge. तो शायद उस वजह से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जो थी पुणे में, हमें उस तरीके की डिफरेंस नहीं महसूस ये हुई थी. The only thing I remember that I would say, because you're asking me, was site work में. Site work में हमें बहुत दिक्कत होती थी कि साइट में जाओ तो वहाँ कंस्ट्रक्शन पे इंजीनियर्स होते थे, साइट इंजीनियर्स होते थे, वो हमारा मानना इतना सीरियसली लेते नहीं थे. They would always need a male member to tell them what to do. हमारा डिजाइन immediately नहीं लेते थे. Meaning that's the difference that I see then and now. अभी लड़की हो या कुछ भी हो, दे आर लिस्निंग. बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई नो दैट वी डिडंट हैव वॉशरूम्स ऑन साइट. तो बहुत बड़ी दिक्कत होती थी कि इतना दूर आप बस लेके जाओ, उधर बस लेके जाओ और वहाँ आउटडोर, लिटरली इन दैट 88-95 के जो टाइम पीरियड था ना, पब्लिक टॉयलेट्स फॉर वुमेन थे ही नहीं, और साइट पे भी वो था नहीं. सो वी यूज्ड टू फेस दैट एज अ प्रॉब्लम टू बी इवन एबल टू टेल द कॉन्ट्रैक्टर कि हमें जाना है. वो दिक्कत होती थी. अदरवाइज हमारी बात मानने के लिए हमें कहना पड़ता था क्लाइंट को डायरेक्टली कि देखो आपने आपके इंजीनियर्स को ये समझाना है, साइट इंजीनियर्स को, वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं. सो देयर वाज दिस, बिकॉज साइट इंजीनियर्स थे, वो सारे साइट पे काम कर रहे थे. फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द लेडी हु इज टेलिंग देम टू डू दिस, उनको लगता था नहीं हम कह रहे तो ही वही है, ये साइज लकड़ी का इतना क्यों लिया है, ये साइज लकड़ी का डोर फ्रेम का कम करो. सो देयर वाज अ लिटिल hesitation in accepting what we would tell them. I understand. Sorry, go ahead. I understand you actually started with teaching, doing your own little practice, and somewhere you also then started establishing your own grassroots research and consultancy. So just trying to understand, do you really see whether it makes a difference having a spouse or a partner in the same profession, or did you really find it easy transition to become a full-time practitioner? I know you are also very good teacher, so I'm just trying to understand how do you really see yourself in the practice teaching as well as family to run. जैसे मैंने जैसे कहा कि ये 2005 में जो स्कॉलरशिप के बाद मैं इंडिया में आई, तब ग्रासरूट्स एस्टैब्लिश कर लिया था 2005 में. That time my husband used to be there in helping me in going to these different places, क्योंकि कहीं मालेगांव में जाना पड़ता था, नागपुर चले जाओ, या कहीं लेट नाइट होने वाला है तो he would come and pick me. So वो सपोर्ट था और जरूरी था, क्योंकि उस टाइम इतनी सेफ्टी नहीं थी कि कैसे भी कहीं पे भी जाओ और नहीं है. एंड आई वाज डीलिंग विद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक आई टोल्ड यू. सो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ऐसे एक डर सा लगता था कि पता नहीं वो ऑफिसर्स हमारी बात को पॉजिटिवली लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं, कौन आए हैं ये लोग. तो माय हस्बैंड डिड अकम्पनी मी इनिशियली 1-2 साल, फिर बाद में देयर वाज नथिंग लुकिंग बैक. तो क्योंकि वन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टू अनदर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, दैट सक्सेस इटसेल्फ टेक्स यू अहेड.
ऐसे हुआ. बट येस आई मस्ट एडमिट कि इनिशियली मुझे सपोर्ट जरूर था. और मेरा जो ऑफिस एस्टेब्लिश करा वो भी माय हस्बैंड encouraged me to have a separate office. He said नहीं एक office space चाहिए. You can't just operate from home or as a professor you're side by side करो. No, anybody who wants to look at you seriously as an architect, environmental architect, you must have your office space. Call them into your office, discuss the projects in an office space. So तब हमने invest करा था office space में. So yes, he and my family they supported us for this. तो वो support के बिना नहीं होता था ऐसे मुझे लगता है. 20 years now back, 2005 में. It's a joint office, if I understand it rightly. अभी नहीं है तो he did not take part in my projects but he supported me. जैसे मैंने कहा लेट होता था, कहाँ से हम आते थे और उतना हमेशा फ्लाइट तो हम लेते नहीं थे. आजकल उठो तो चलो यहाँ वहाँ पर फ्लाइट से चले जाते हैं. But that time it was train journey, bus journey. The bus would drop you at any odd junction. So my husband would come and pick me up at that junction. He used to take care of my 2 daughters that I had. So वो support system तो थी घर पे, इसीलिए And possible that is था. crucial, huh? That is नहीं था. crucial in the हाँ early career. early time. stages, yeah. हाँ बहुत बहुत important था वो support मुझे initially. And had I been a single woman at that time, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना support मिलता था. अवार्ड फंक्शन और ये वो मैं अपनी दोनों डॉटर्स के साथ जाती थी. तो एक आई नो वो एक अलग माहौल बन जाता है व्हेन यू आर विद फैमिली एट दैट टाइम. अभी सीन बहुत चेंज हो गया है. बट इन 2005 इट वाज इम्पोर्टेंट कि मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा कि they would look at a woman who's a woman as a complete woman if she has a husband and if she has kids. वो एक Yes. मुझे लगता Respect है का वो level एक बढ़ change हो जाएगा. कि अच्छा इनकी फैमिली भी है, अच्छा इनकी 2 डॉटर्स है, इतना करती है, वो मुझे मैं जानती हूँ वो सपोर्ट या दैट वुड आल्सो ऐड टू दैट. क्योंकि आसान नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मीटिंग्स लेना, उनके साथ मीटिंग करना, लेट तक होना. उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ देयर आर पीपल एंड देयर इज अ फैमिली वेटिंग फॉर हर एट होम. ऐसे Generally we see that actually men have an edge on this in terms of practice, where women have to be very disciplined in terms of taking commitments, taking appointments, and taking projects to even that extent. Do you think that that really makes a difference because we have more men in the practice? So I have lost, we have many as a practice, we've lost a lot of projects because we were not able to network the way these guys can network. And that appreciation is not there in the society, that women are doing practice as well as they are taking care of the family. If they generally it is seen that the successful woman has to act like a man. She has to be available all the time the way men are available. Which is a bit of unfair, I feel. And from my studies, I realized that it is one of the reasons why many women are really in that state of compromise between the family and the practice, and they take a middle path. They take a middle path because having children is a 24/7. Children itself is a project. Though my family supported me by having a full-time house help. We had a full-time house help, so that was lot of my responsibilities were taken care by her. तो मैनेजमेंट करनी पड़ती थी खाली, because my projects were like environmental projects है तो आपको कहीं भी जाना पड़ेगा ना, नागपुर जाओ, मालेगांव जाओ या नॉर्थ इंडिया जाओ, तो उसकी वजह से वो घर में था. बट लाइक आई टोल्ड यू, नेटवर्किंग करने में हम लोग कम पड़ते थे. जो गाइज है तो वो ना अपने फ्रेंड्स कर लेते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, किसी बड़ी फर्म के साथ जुड़ जाते हैं, कोलैबोरेशंस बनाते हैं. तो वो मैं कोलैबोरेशंस नहीं कर पाई हूँ. माय फर्म इज स्टिल अ प्रोप्राइटरी फर्म which I would have really wanted this firm to become a private limited company with several directors on board. मगर शायद nobody wants to associate, और मेरे साथ कोई डायरेक्टर नहीं बनेगा. उनको लगेगा, उनकी फैमिली को शायद लगेगा कि अरे लेडी के साथ ये क्यों जुड़ रहा है. Whereas if there are 2 men, they easily form collaborations. तो वो मैंने बहुत देखा और that has been a setback for my company.
Absolutely. और I जो think that is faced by many of us in the career to practice, because the collaboration and networking requires a lot of additional work and yes, beyond the office hours. That is हाँ important. exactly, वो मैं कर नहीं पाई. वो बहुत लोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, and that affects of the way we practice, And because we even want, today it is affecting, huh? it Even is today affecting I'm not even able today. to. Yeah. That scene about networking 20 years back or today is the same. You just cannot stay up late night and चलो किसी को कार्ड दो और कहो कि चलो let's No, collaborate. No, घर you में can't आते do ही that तो easily. घर में आते ही घर. That is there. So my next question is towards some life-changing moment or decisions you took in which really changed the way you work today and practice today, and where you are today. Life-changing decisions. जैसे meaning how are you looking at that? Or some ideal in the way you practice today, whatever you do, are you influenced by something, or did something happen, or how did you chart your now very focused path? Now एक तो ये है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिल्डर्स के साथ काम नहीं करना है. I can relate with it very much. तो वो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट सारा खो जाता है एंड देन वी वर नॉट एबल टू बी एज पैशनेट एज आई सॉ मेरे ऑफिस में जो हमने एक दो बिल्डर्स के साथ प्रोजेक्ट्स करे, सो टीम वाज नॉट सो हैप्पी इन वर्किंग ऑन दैट. एक पेड़ काटो तो 5 पेड़ लगाओ, और 5 पेड़, एक बड़ा सा बैंगन का ट्री काटो और फिर सुपारी के पेड़ लगा दो, बीटल पाम्स. सो वो सारी चीजें हमें नहीं पसंद थी, तो हमने एक डिसीजन ले लिया कि नहीं, चले चाहे जो छोटी हो जाए अपनी प्रैक्टिस, पर हमें बिल्डर्स के साथ नहीं जुड़ना है. वो एक डिसीजन था कि फिर दूसरा एक डिसीजन था कि रिजॉर्ट्स वगैरह बहुत बनते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, मगर somehow being this lady who's not been able to network so much, मुझे वो रिजॉर्ट्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मिले. It is, I know that has been the drawback because of me being a lady. फिर भी मैंने एक 4 साल पहले मैंने एक joined business management group to understand what is business, how to take your business ahead. तो उसमें भी ऐसे 30 लोग थे, उसमें खाली 3 लड़कियां थी हम. You see, we are एंड वो seeing भी, the same problem in water. I will invite you to the water sector also. हाँ, But बस we are only 3 seeing the ladies. same composition, very, very meager representation of women. Very meager. और मैंने वो Actually, कोर्स water ज्वाइन में करा था. it is worse than architecture, by the way, because I am studying now both the sectors. I do realize, and I am able to Okay, compare. It's really bad in water. Architecture में it is still better. at least है. Okay. आर्किटेक्चर में शायद अभी बहुत सारी गर्ल्स आ गई है. इफ यू लुक एट द कॉम्पोजिशन ऑफ द क्लासरूम इन माय Yes. टाइम 30 years back and today, there are girls are more and boys are less. Yes, So many वो places. चेंज हो गया है. Yeah. सो ये आर्किटेक्चर का सीन अलग हो जाएगा. तो ये बिजनेस मैनेजमेंट का क्लास था ना, तो उसमें 30s के सारे बॉयज थे, 30s 40s के. मैं ही एक थी जो 50s की थी. And so imagine boys can think of business management and business growth at the Early age of age. 30. तो मुझे ऐसे लगा, अरे ये तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी इनको ये सारे टिप्स मिल रहे हैं. तो वैसे अगर मुझे उस टाइम किसी ने गाइड किया होता कि ज्वाइन अ बिजनेस ट्रेनर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, बिकॉज एज एन आर्किटेक्ट यू नेवर स्पोकन टू बाय Yes. बिजनेस के जैसे देखना अपनी प्रोफेशन को हमें सिखाया ही नहीं है. In your Absolutely. Even हमको architectural, टीचिंग भी नहीं सिखाया, हम फिर भी टीचिंग करते हाँ, रहते हैं. वह करते रहते So हैं. because So being how architect is not equal to being a good architect does not make you a good नॉट मीन teacher. अ गुड टीचर, करेक्ट, यस. हमें तो बीएड वगैरह सिखाती ही नहीं है. और ऊपर से ये हमने देखा कि अरे बिजनेस मैनेजमेंट क्या करना होता है, हाउ टू अपॉइंट पीपल, हाउ टू नॉट टेक पीपल, कैसे टीम्स बनानी है, हाउ टू डेलीगेट टास्क, ये सारा उस बिजनेस क्लास में मैंने अभी अभी सीखा, मीनिंग अबाउट 5-6 years बैक. और मेरे साथ मैंने जैसे कहा, दीज बॉयज वो देयर 30-40s में, क्योंकि उनके पापा बिजनेस में थे, आर्किटेक्ट्स भी थे और इंजीनियर्स भी थे. तो उनको वो बैकिंग था, और वो मुझे दैट टाइम महसूस हुआ कि एज अ लेडी आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट. एंड माय हस्बैंड ही वाज इनटू अनदर प्रोफेशन, तो ऐसे मिला नहीं मुझे वो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट. वेयर एज आई एम सीइंग दैट द गर्ल्स हु आर वर्किंग विद देयर हस्बैंड्स parallelly are doing well, because the husband does all the networking or projects lana, leads lana,
whereas I'm not able to bring in the in those same many profession, leaves. husband being in the My same husband is a profession. filmmaker. Yeah. He's a filmmaker. Yes, I'm saying, do you see the difference that if when a spouse is in the same profession, it makes a Yes, huge same difference? architecture. Oh yeah. मैंने बहुत फर्क देखा है. Very good. I will discuss with you at length later because I have that kind of combination, and it's it's by individuals, it is by relationship, and I have started questioning whether it is right to have a same profession spouse or not. So it always looks grass is greener on the other side. Really listen to you saying that if the other spouse is also from the same profession, it helps. We can have a longer conversation on this some other time because I have that combination and I do not agree with it on this. Oh, you don't? But it is about individual combinations and experiences. That brings me to the next question on your physical and psychological aspects. When we talk about being women in the profession, you were already describing how things are on the site and what happens when you work with the government, and what it is to be having your own office and so on. And it's very interesting to hear that you do acknowledge that the support of family makes a huge difference in starting and setting up your own office and all. Do you think it really helps in the way you look at your design approach also, being a woman? How do you see that it really influences your design and business approach? Because you were also mentioning that you do realize the difference when you did the business course. So can you tell us a little bit more on how did it really change your design and business approach when you are an independent entrepreneur and all by yourself? During that time, I must say that there was a time when I had only girls who joined my projects. And we were such a big girls gang कि ऐसे हम सोचते थे कि नहीं अभी अभी नया लड़का लेना है तो न्यू बॉयज ही लेने हैं. Because this kind of work, that is architecture and environmental architecture and water bodies and river fronts, वो सारी चीजों में रुचि गर्ल्स ज्यादा लेते थे because we were looking at intrinsic connectivity of botany, zoology, watersheds. So somehow we just had girls with faculty. So literally when we got a boy in our office, उसको तो सबने new boy कर दिया था. His name was new boy. Literally वो हमारे साथ जब join हो. So it was almost 10 years that we were a huge girls gang. So मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं it is about the girls who are able to do this multi-tasking with multi-disciplinary projects. Guys जो है ना वो ऐसे मेरा मानना है ना, they would just look at one thing, whereas girls are able to, उनकी capacity है जैसे कि अलग अलग चीजों को इकट्ठे देखना. And water is like that, ecology is like that. Ecology is very very complex. Simple सा पानी जो दिख रहा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं. So वो I feel as girls were able to connect to much better. Very well put, and especially because you have water as your main area of work, we can very well relate. Multidisciplinarity is important, and women have that additional knack towards environment, and also multitasking is our skill there. Yes. These are very very important. I will say skill sets. At the same time, we also realize being women sometimes we can also take an advantage of it. I'm just curious to understand, have you had situations where you felt in your work or something that, oh, being woman in this position actually puts me in a better situation to handle or to get the project or do something, the opportunities of जब being एक बार woman, एस्टैब्लिश हो गए थे ना, जब एस्टैब्लिश हो गए थे यानी 10 साल हो गए थे, उस टाइम एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया था. और तब मैंने जाना था कि एज गर्ल्स वी आर मोर कॉम्पिटेंट. ऑल माय सीनियर आर्किटेक्ट्स हु जॉइन मी ऑन दीस एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, दे वर सो फ्लुएंट एंड दे वर सो, उनको अपनी अपनी कमांड अच्छी थी. और आई नो दैट द गाइज वुड रियली लुक, गाइज यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले या कोई भी हो, वो ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे. ऐसे मैंने देखा वो डिफरेंस था. We had an advantage on that. Yes. But do you think we require more things to prove our skills than men? Do you think that that there's अभी ये फिलहाल 5 साल में नहीं,
अभी के 5 But साल में earlier, मैं डिफरेंस देख रही हूँ, बट अर्लियर बहुत था, अरे बाप रे, यू हैड टू प्रूव दैट यू रियली मीन वर्क, बिकॉज हम नेटवर्किंग के बिना जाते थे ना उधर, तो इट वाज ओनली योर स्किल सेट दैट यू आर प्रेजेंटिंग एंड टॉकिंग and अबाउट। that takes हम time किसी to को ना prove. जानते हैं, ओ या आप तो किसी को भी नहीं वहां जानते, कोई ऑफिसर को नहीं जानते, किसी की फैमिली को नहीं जानते हो, आप अपनी स्किल्स लेके वहां जाते हो। तो लाइक आई सेड, नेटवर्किंग उसके प्रोजेक्ट के बाद तो हम शाम को किसी के साथ नेटवर्किंग भी नहीं करते हैं, तो फोन यू भी नहीं लूज आउट करते ऑन हैं. दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ. हाँ, फोन भी नहीं करते, लेते भी नहीं है फोन हम शाम को। वो तो हमारे घर में भी बाद में झगड़े होने लगे कि हाउ आर यू टेकिंग अ कॉल एट 9:30, यू शुड टेल योर पीपल 9 के बाद फोन नहीं करना है। सुबह सुबह नाश्ता कर रहे किसी का फोन Whereas आ गया men तो can ऐसे, easily talk, huh? Even at 11 हाँ वो 11 बहुत, p.m. हाँ हाँ, मुझे वो बहुत फील हुआ बाद में कि जब एस्टेब्लिश होती गई, तो सी इट इज लाइक यू कांट से कि मुझे प्रैक्टिस लिमिटेड रखनी है, जी. इट इज नॉट इन योर हैंड। थोड़ी थोड़ी जब प्रैक्टिस Ideally ग्रो होना होती चाहिए. है, If men become homely, हाँ, they should also not do things beyond the office time. They should do home हम्म, activities in the home time, which हाँ they हाँ don't do. हाँ, But we don't have choice तो as women. हाँ, करेक्ट। सो वो मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे घर में कि ये इतने बजे क्यों फोन लिया, वो उतने बजे क्यों लिया, ये सुबह सुबह क्यों जाना है, परसों ही क्यों मीटिंग है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो मीटिंग। बट देन ऐसे है ना कि व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, यू हैव टू बिहेव लाइक अ मैन एंड बी इनटू दैट बिजनेस। यू कांट से कि मुझे आज बेटी का पीटीए मीटिंग है और ये है, वो नहीं कर सकते ऐसे। हमेशा एक डर रहता था कि मुझे अपनी फेमिनाइन सिचुएशन आगे नहीं रखनी है। आई नेवर वॉन्टेड टू टॉक अबाउट माई डॉटर्स कि मेरे डॉटर बीमार है या मेरी डॉटर की पीटीए Use मीटिंग है। them, हाँ. हाँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था कि आई यूज्ड टू थिंक नो, आई एम इक्वल, व्हाई डू आई हैव टू से कि मेरे घर में आज मेड नहीं आई है। मैं जाती थी वहां, बट But घर में वो थोड़ा just टसल curious. होता रहा कि But yes, घर में वो tussle होगा because somebody has to do it and it is often the onus is on us. हाँ हाँ हाँ, But just onus is curious, on you, हाँ Pallavi, just curious, Pallavi. This is where the literature talks about the inbuilt guilt which women carry if they do not do the full attention to the house. If they don't do much हाँ to the हाँ profession, they are still willing to compromise that. But then there is no room for compromise at the personal front and the domestic front. Don't you think that it is हाँ unfair by the society, yeah, and which we carry in ourselves, that they expect us to act like men, and many women do act like हम्म, men, to practice in the men's world. Uh, Instead of that, don't you think that there should be some way that we should start teaching men to behave more like womanly and homely, and everybody talks about house in the वो about मेरी, house after the हाँ, office hours, ideal situation. Anyway, आइडियल सिचुएशन, it is very very मगर ideal वो मुझे situation. बहुत दिक्कत हो गई थी या, But I बिकॉज think this is माय more of a वर्क्स वाज social अ लॉट ऑफ problem. ट्रैवल, Huh. More सोशल of a प्रॉब्लम था, social ट्रैवल हुआ problem, but करता then था। if we agree to it, don't you think that we actually endorse the existing patriarchy? Because we are trying to prove that we या, can do because men can do, हाँ हाँ हाँ, instead of questioning the very fact that भाई साहब 7 बजे आई के नो, बाद घर पे काम करना है, तो आपको प्रोजेक्ट के हाँ बाद क्यों हाँ करना हाँ, है? आपको भी अपने घर पे करेक्ट, काम करना चाहिए. We are हाँ unable to हाँ put हाँ, this question, huh? आई And वाज अनेबल टू डू दैट। unknowingly we are actually encouraging patriarchy to stay longer. यस, आई डिड दैट, आई आल्सो फेल इनटू दैट ट्रैप, We और all fall into कॉन्फ्लिक्ट्स that trap, बहुत and I सारे वो, feel sometimes lucky to not fall into that trap, and that's why I struggle a lot in my profession, because I हाँ am हाँ not बहुत, budging to be practicing as man. So that is my biggest हाँ, weakness. I wish to practice as a woman, like woman, यस, and that of course comes with a heavy cost on the practice. But ओह coming back यस, to our discussion about your working around people, now you say that things are much easier. But just to understand, how do people generally in the field now see, and then they used to see women in the leading role of the practice, the partner, the staff, इतना आसानी से side. क्या था ना, हाँ, इतना आसानी से प्रोजेक्ट पे हमें लीड रोल नहीं मिलता था, बट माय प्रैक्टिस वाज डिफरेंट, सो डिफरेंट थी, और उसमें उनका दे डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसलिए वो
लीड रोल मुझे मिलता गया, और फिर मुझे कहीं ना कहीं पता भी चला कि आई शुड हैव अ डॉक्टरेट आल्सो, कि अगर आई हैव टू प्रूव माय पॉइंट, लेट मी डू माय डॉक्टरेट। क्योंकि एक टाउन प्लानिंग और ये होने से मुझे ऐसे लगा था कि इतनी जगह मैं जाती हूँ, तो मे बी इफ आई हैव अ डॉक्टरेट आई विल बी द नॉलेज पर्सन, देन देयर विल बी नो क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने बहुत कष्ट उठा के पीएचडी भी करी हुई है। I do see वही that था। you also have a late PhD like me, because it Oh is out of yes. realization as well as the urge to Yeah. learn, to do more and be more. First to learn We have a है। very common, by the way, professional trajectory. Huh? If you see, the only difference is that you have a full, well-established office to run and, projects in hand, which is very, very encouraging and inspiring to hear from you. Uh, uh, one of my questions in this conversation is about the profession. And I think it will be very easy for you to answer because you're already working in environment and water and all. This is the only question in this interaction. I wish you to imagine a situation because it's a patriarchal profession, because it is in a patriarchal society. Just imagine for the sake of it, that there are more women architects in the city, okay, in the leading position. What do you think cities would have really looked like? I feel it would have really made a difference, because cities के जो issues है, that I'm seeing, whether it is in Patan or Ahmedabad or Mumbai, that is from a small city to a big city, I am seeing that if it, even if it is transportation issue or mainly transportation and build forms and bylaws, I'm sure ladies would have done it better. मल्टीडिसिप्लिनरी है ना उसमें, कि किसको रिहैबिलिटेट करना है, क्यों रिहैबिलिटेट करना है। जैसे कि हमारी एमएमआरडीए में एक अश्विनी भिड़े करके टाउन प्लानिंग जो एमएमआरडीए की चीफ बनी थी, उसके अंडर प्रोजेक्ट्स शी वाज वेरी ट्रांसपेरेंट, शी वुड गो आउट ऑफ अ वे टू हैव सेमिनार्स विद कॉलेजेस, सेमिनार्स विद ये ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जाके वो बताती थी कि ये प्रोजेक्ट का ये है। सो आई फील लेडीज हैव अ वेरी इनहेरेंट अर्ज टू बी ट्रांसपेरेंट, whereas guys बहुत छुपे छुपे बहुत काम करते हैं, ऐसे मैं बोलती हूँ Of course, don't hold me I for mean, that, it's your but I'm personal not very experience. transparent. हाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गाइस सारा बोलती ही नहीं है, सब कुछ सारी चीजें बताते क्यों नहीं है, ये है। whereas I have seen girls will open up, girls in that टॉप पोजीशन, जैसे मेरी Of एज course, की अगर कोई एमएमआरडीए प्लानर है, कोई साइंटिस्ट है, तो आई हैव सीन गर्ल्स आर मोर वोकल, दे आर एबल टू आर्टिकुलेट बेटर, चाहे they wish to हिंदी हो solve इंग्लिश the हो वो नहीं problem, है। not ढाको the problem, solve the problem. ढाको, वो मैंने देखा है, जेंट्स या मेल मेंबर्स मेरे एज ग्रुप के ना ढांकना चाहते हैं, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उनको चाहिए ही नहीं होती है। whereas girls want everything as transparent, अच्छा ये प्रोजेक्ट है उसमें इतने पैसे आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक इतना दे रहा है, आपको ये करना है। मगर ये गाइस का कुछ ना कुछ उसमें अपना अपना जोड़ होता है। Which is what is I have which seen, is a very whereas important aspect, but I still wish to understand from you, how will cities look if there are so more cities would women look much architects? better. In for example, what would you see in the cities different? So cities would have been more organized, कि जहाँ पर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट चाहिए, शॉप्स रिटेल शॉप्स चाहिए, वहाँ आ जाती थी रिटेल शॉप्स, जहाँ स्कूल्स होनी चाहिए वहाँ स्कूल्स आ जाती थी। इफ लेडीज वर ऑन द टॉप पोजीशन, डीपी जब बनता है अपना डेवलपमेंट प्लान, दे वुड हैव पुट देयर फुट डाउन एंड दे वुड हैव सेड कि नहीं ये सबब को ये चाहिए, because at home also they are doing so many multitasks, so they would have understood this development plan and city planning much better. एंड बिल्ट फॉर्म जो आज हम फंस गए हैं इस अपार्टमेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर में ना, I'm sure ladies wouldn't have allowed us to फंस जा, हम वैसे फंस गए हैं, literally everywhere you see our apartments, ना कपड़े Pigeonholes. I call सुखाने के them लिए pigeonholes. पिजन होल्स, या ना कहाँ बच्चों को खेलने की जगह है, ना कोई पॉट्स, you know people like to connect with a pot, you see a flower in the morning, a lady feels so nice to show the flower to the child, मगर आज के अपार्टमेंट्स में वो पॉसिबल ही नहीं है। कपड़े सुखाने इतनी सोलर एनर्जी है, सोलर एंड विंड एनर्जी बोथ, वो तो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है। व्हाई आरंट हाउसेस डिजाइन वे यू कैन यूज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी टू ड्राई योर क्लोथ्स, बट द गाइज एंड द कंपनीज आर प्रोमोटिंग वॉशिंग कम ड्राइंग एंड कम इलेक्ट्रिसिटी, कितनी कंज्यूम करवा रहे हैं।
Very तो वो unsustainable चीजें practices, huh? very I think, isn't unsustainable. it shortcut to success, which is more endorsed by the masculine way of cities? I mean, I think so. when you were I think talking, I so. just felt like, you know, हाँ. I give some words to it because but do you think that if we were more in numbers and doing these kind of things, we would have actually been more successful, or we would have been same I think we should have been situation? in the position of, see देखो हमारे टाइम में गर्ल्स ने मास्टर्स बहुत कम लड़कियों ने करी थी. Hmm. बहुत कम लड़कियां आफ्टर द एज ऑफ 22 वेंट फॉर देयर मास्टर्स Oh, प्रोग्राम. that those statistics are there, huh? और Do जो you? लड़कियां, हाँ, और जो लड़कियां मास्टर्स प्रोग्राम के लिए गई तो वो आधे करके तो लड़कियां बाहर ही चली गई. मेरे क्लास की जो लड़कियां थी जिन्होंने मास्टर्स करा वो यूएस में है. और जो मेरे साथ जो बॉयज थे जिन्होंने मास्टर्स करे, दे आर एट दोस पीडब्ल्यूडी में जॉइंट डायरेक्टर, इसमें जॉइंट डायरेक्टर. So that means they must have been at those decision making places, because only when you do your masters you reach those levels ना. Absolutely. नहीं तो जस्ट एज एन आर्किटेक्ट, हाँ, तो वो मैंने देखा कि अगर लेडीज जाती थी ना उस लेवल पे तो बहुत डिफरेंस आ जाता था. और हमारे टाइम में तो बस 22 ईयर ओल्ड पापा कहते थे बस अभी 22 बहुत हो गया, मास्टर्स करना है तो अपने हस्बैंड के साथ मास्टर्स कर लो. वो था 5 years of architecture was quite tough Yes, for me and my sister. वो इतनी शीट्स थी, वो रोटरी ड्राइंग पेन्स थे, वो सारा बहुत खर्चे का मामला था उस टाइम. सो absolutely. बाद मास्टर्स जरूरी था. एक्चुअली हैड गर्ल्स डन देयर मास्टर्स एंड पीएचडी एट दैट टाइम दे वुड हैव गॉन एट दैट as a senior town planner position. They would have been at planning at different locations where they would have made a difference, surely. Oh, Is my belief. you really touch a very important aspect, because nowadays when things are changing, we see a lot of girls are actually trying to continue their education for two reasons. They want to escape starting family, and Ah, also they want to pursue a career. you Because rightly said studies that. show, statistics show that actually same number of women and men have graduated in architecture, but then when you see how many people are practicing, you see more men are practicing and less men, women are practicing. So somewhere in Yeah. between, girls have disappeared from the Yes. Ha, scene, ha, you ha, know, from the ha. profession, and that speaks a lot about the social behavior. And now I Ha. receive a lot of calls from girls who want to do masters because they want to escape the family Escape from the start, family. Ah, yeah. Even which I is know in a many way, in the girls. long run, we will see that they will have some Yes. position and Ha, ha, ha. profession, you know. So you rightly mentioned it. That brings us to the last question of this conversation here, Pallavi, and it's a very simple question for younger generation. We like you to address to the younger generation about how to make this profession more woman or gender inclusive. How can we make the profession gender less, you can say, or you can say more gender inclusive, you know? How to make room for more girls to be doing good in the profession? Your message for the younger generation. For this, Mansi, मुझे ऐसे लगता है कि if girls are into this, more and more girls are able to put their heart and soul into it, they will automatically come out with good solutions. And if there are more girls into it, there will be a girl opposite who's listening to her sensibilities. I feel girls have a lot more sensibilities when it comes to a house design also. They'll think about how the maid comes in the house. They'll think about how Dadaji is going to sit in his veranda. So these finer aspects about a family, वो inherently girls के पास अभी भी है. So the more the girls are able to practice from their heart and soul, किसी husband का नहीं मानो, don't listen to anybody. Just do what your heart tells you, and I'm sure they'll be able to make a difference. So what should be your message to the So boys then? they Because how to make it more gender friendly profession? they have to be receptive to all the ideas that the girl is telling them. They should not rebuff whatever she says, because her understanding comes from her genes. बहुत सालों के जीन्स है उनमें, सो थोड़ा रिस्पेक्ट करो वो चीजों को, ऐसे मुझे लगता है. सो लेट इट बी अ गुड टीम वर्क, so there would be good insights into these inherently जो जेनेटिकली हम लड़कियां जो जानते हैं जो चीजों को जो हमारे रगो रगों में है, वो एक्सप्रेशन दे दो.
and allow the guys also to understand that it is her expression that is coming out and support her expression. So that support has to come not only from the family but also from the profession, because most of the suffering in the profession is actually from the professional colleagues, not from anywhere else. If there is more room and acceptance in the profession by the men, then there is better situations for women. I think it's a very good conversation. We can go on and on. In fact, I will get you more to discuss on water because that was not the focus today. And we can keep talking about water and urban lakes endlessly with our passion into it. But it is rare to find women in this country who have architecture profession and who is working on water and who is passionate about animals. And you are going to be one of our speakers in our water section as well. Very soon. So I'm looking forward to having that conversation with you. Thank you so much, Pallavi. And we hope that you are okay that I'm going to put this in the public domain as well as put your words into the manuscript. Thank you so much, Pallavi. Thanks, Mansee. Thanks. And I also appreciate the effort that you're taking. It is really very creditable that you're going out of your way and doing this as an initiative. I really appreciate that. Thank you so much. That's the least we can do for women in architecture, hai na? But you're doing really well. Best of luck. We have to do that, just appreciate others. That's the least we can do. Thank you. Please take care and